So Shabib, let's start. Please share your screen. All right. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। मैं और शबीब इस सेशन में हैं और हम इस उर्दू हिंदी बूट कैंप के अंदर नॉलेज शेयरिंग करेंगे। तो सबको सबसे पहले वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, wherever you are. And we will see. Can you move down, please? Shabib. Shabib, can you move to next slide? I think there's some connectivity issue around Shabib, so I can share my screen. So connectivity around Shabib. I would just like to welcome everyone. खुश आमदीद सबको. तो हम कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर लॉजिक एप्स के बारे में हम बात कर सकें. तो शबीब और मैं लॉजिक एप्स के बारे में बात करेंगे. तो let's jump to the main topic around it. So पहले small introduction about me. My name is Amir. I'm the development manager on Magic Global with 14 years of technical experience. So far काफी अच्छे सेशंस हो रहे हैं एंड मैं और शबीब जो है हम दोनों भी कोशिश करेंगे उस मोमेंटम को बरकरार रखें. तो शबीब, hand over to you. Can you introduce yourself and share your feeling about this community forum? Ahmed bhai, can you hear me? Looks like there is some we have some technical issue while Yeah, sharing. Shabib is not able to hear. Okay, right? Shabib, your voice is cutting, I think so. Jawar, can you help here? जी शबीब आपको आप can you hear me शबीब? शबीब आपकी आवाज मैं ठहरे मैं आपको एक दफा रिमूव करता हूँ और फिर से आपको लाइव लेता हूँ तो शायद इससे कुछ डिफरेंस हो. Shabib, can you hear me? जी मेरे ख्याल में आमिर Shabib he maybe there is some connectivity issue. Shabib looks like he's talking but there is some cutout in conversation. Let me try again once more. Ji Shabib, can you hear me?
ओके शबीब, इफ यू आर ऑन, आप ऑलरेडी अगर दूसरे हमारे टेस्ट स्टूडियो में हैं, काइंडली उसे क्लोज कर दें, तो मे बी उससे आपकी बैंडविड्थ वगैरह कुछ अगर इशू हो तो बेटर हो जाएगा. Technical issues are also part of these live events, so Yeah. and I think I am the victim. I have faced most of the technical issues, so I think I can continue, right? तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर देखते please, हैं. please, thanks. Unfortunately, Shabib is having some technical issues. तो शबीब मेरे साथ हैं. हमने एक डेमो प्रिपेयर किया था. लेट्स सी हम उसको अगर शबीब बीच में ज्वाइन कर पाए तो हम कंटिन्यू करेंगे उस डेमो को. बट आई विल ट्राई व्हाट आई कैन कवर विद दिस थिंग. आज का एजेंडा हमारे पास है कि हम लॉजिक ऐप्स को इन डेप्थ देखेंगे कि व्हाट इज लॉजिक ऐप, व्हाई इट इज यूजफुल, वेयर इट कैन बी यूज्ड. देन वी विल टॉक अबाउट कि लॉजिक ऐप्स को काम करने के लिए आपको क्या वर्क स्पेस रिक्वायर्ड है. बिकॉज आई एम हेयरिंग कि हमारे पास काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ग्रेड्स भी इस फोरम में ज्वाइन किए हुए हैं. तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, ताकि उनको भी एक अच्छा एक फोरम मिल जाए ताकि वो लॉजिक ऐप की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें. Then I will talk about the basic building blocks of Logic App. कि Logic Apps के अंदर क्या क्या building blocks होते हैं. Then we have a lot of connectors within the Logic App. So I will share some of the connectors कि हम किस तरह से उन connectors के ऊपर बात कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें consume कर सकते हैं. Then we have some demos around it. So हम उन demos को cover करेंगे. तो डेमो के बाद मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी जाऊंगा, जिसके हम इंटरप्राइज इंटीग्रेशंस को कवर करेंगे. आई विल ट्राई टू कवर इंटरप्राइज इंटीग्रेशंस एंड आई विल ट्राई टू कवर वन ऑफ द डेमो लाइक इनबाउंड और आउटबाउंड. And then I will show some demo of that enterprise integration as well. So that's how I will end up this presentation. So I will move towards the Logic App. So Logic App, what is Logic App? So I will try to cover this Logic App with three whys, what, why, and where. तो हमें जब लॉजिक ऐप पे काम करना होता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि भाई ये लॉजिक ऐप है क्या, और हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए. तो लॉजिक एप्स आर सिंपल a design workflow that start with a trigger and then execute a series of steps for invoking any app while handling the authentication checkpoints and durable execution. So that means कि आपने simple कुछ नहीं करना. Logic apps के अंदर आपके पास एक designer window है. You have to design some workflows, you have to add some triggers ताकि आपकी जो logic apps हैं वो either manual trigger होंगी और with some recurrence based trigger होंगी या किसी इवेंट पर ट्रिगर होंगी. तो दैट्स हाउ यू डिफाइन योर ट्रिगर्स बेस्ड ऑन द वर्कफ्लोज एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड द लॉजिक एप्स. तो लॉजिक ऐप कैन वर्क एज अ मीडिएटर. तो पहले ज़माने में अगर आपने देखा होगा आपको एक मिडिलवेयर लिखना पड़ता था. आपके पास एक लॉजिक है ऐप है, आपको किसी एक्सटर्नल सिस्टम से उसको इंटरेक्ट कराना है तो आपको बीच में मिडिलवेयर लिखना पड़ता था. तो नाउ दैट मिडिलवेयर कॉन्सेप्ट इज रिप्लेस्ड विद अ लॉजिक ऐप. तो अब आपको इसकी वरी की जरूरत नहीं है कि भाई आप मिडिलवेयर कैसे लिखेंगे, हाउ यू कम्युनिकेट द टू सिस्टम्स. तो ऑल दोस कम्युनिकेशन पार्ट्स इज हैंडलिंग बाय द लॉजिक ऐप. then if I talk about why हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो again as I summarize कि भाई आपने अगर टू सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, टू इंटरप्राइज इंटीग्रेशंस, आपने इंटरप्राइज इंटीग्रेशंस बिल्ड करनी है, तो दैट्स वेयर यू नीड अ लॉजिक ऐप. पहले ये हासिल होती थी कि भाई डेवलपर्स एक लॉजिक बिल्ड करेंगे, दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, तो उसकी डिप्लॉयमेंट हैसल्स, उसकी मॉनिटरिंग हैसल्स, तो वो सब चीज़ें जो है ना अब आपको नहीं करनी. यू डेवलपर जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लॉजिक ऐप लॉजिक्स. आप अपनी लॉजिक्स को जो है बिल्ड कर रहे होंगे और इसके बाद जो डिप्लॉयमेंट हैसल है वो आपके पास कुछ भी नहीं है. Azure infrastructure is just a simple infrastructure that you deploy on the Azure, and that logic app will handle all the deployment hassle as well. तो अब डेवलपर जो है ना मोर फोकस कर सकते हैं लॉजिक एप्स के ऊपर. लॉजिक एप्स आपको ये भी मैकेनिज्म देती है कि भाई either you want to run the integration manually via trigger, or that integration has to trigger on a defined recurrence. तो both of the triggers आपको मिलते हैं कि भाई recurrence based कर लो और
the event based कर लो. आमिर भाई, Yes. सॉरी फॉर इंटरप्शन. शबीब उन्होंने रीज्वाइन किया है. अगर आप चेक करना चाहें एक दफ़ा तो हम अभी चेक कर सकते हैं कि उनका इशू रिजॉल्व हुआ है. इफ नहीं हुआ तो प्लीज शबीब, कैन यू hear me? No, Slide से looks बात like. slide. नहीं, still problem. I think हाँ, नहीं है. unfortunately that's happened. So I think I will Thanks. continue with the momentum. Sure. With the momentum. Please. Thank you. So Thanks. if I talk about why के बाद अगर if I talk about where the logic apps कहाँ use होनी चाहिए, तो logic apps आपने कोई भी enterprise integration build करनी है, आपने file based integrations build करनी है, आपने कोई alert based mechanism build करना है, आपने कोई monitoring solutions build करने हैं, आपने दो systems legacy systems को नए system के साथ connect करना है. तो in all those scenarios जो है logic app as a middleware use होता है. और अगर मैं आपको इसको और थोड़ा सा सिंपल और बताऊं तो पिछले एरा में बिस्टॉक आपके पास था, जो कि फाइल शेयरिंग के तौर पे यूज होता था या कम्युनिकेशन के तौर पे यूज होता था. तो अब ये लॉजिक ऐप जो है इट्स सम सॉर्ट ऑफ रिप्लेसिंग बिस्टॉक एज वेल in those integration scenarios. So that's how logic app can be used in all of these scenarios. So we will see in more detail कि किस तरह से logic app build हो सकती है and क्या क्या चीजें ऐसी components हैं, और so we will cover in demo in next slides as well. So this is a bit technical for developers who are starting working और जो integrations build करना चाहते हैं. तो आपके पास लॉजिक ऐप पे काम करने के लिए वर्क स्पेस की जो प्रीरिक्विजिट्स हैं उसमें you just need a basic Visual Studio 15 or higher. आपके पास Visual Studio के ऊपर लॉजिक ऐप टूल्स इंस्टॉल होना चाहिए Visual Studio के ऊपर, Azure Logic Apps tools, and then you just need a Azure subscription account and the permission to deploy the logic app. These are very basic, simple things you need on your workspace to start working on the logic apps. If I talk about the building blocks of the logic apps के अंदर, as I mentioned, कि भाई कोई hard coding नहीं करनी. You just need to know कि भाई आपकी logic apps जो है वो trigger based है, recurrence based है, तो you need to know your triggers. देन आपके पास आपको आपकी लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई आपने ट्रिगर करने के बाद आपने क्या लॉजिक परफॉर्म करनी है, क्या आपके लूप्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या एक्शंस आपने परफॉर्म करने हैं. तो सिंपल आपने एक्शंस डिफाइन करने हैं विद इन द लॉजिक एप्स, एंड देन you have a lot of connectors. So Microsoft is providing hundreds of connectors. You can think of any connectors. If you want to build any integration with ERP, it'd be called like Salesforce or finance and operations or anything else. तो इन सबके कनेक्टर्स अवेलेबल हैं. आपने ट्विटर के ट्वीट्स को रीड करना है, आपने कोई ईमेल कम्युनिकेशन करनी है जीमेल और आउटलुक के साथ, आपने कोई फाइल शेयरिंग करनी है ड्रॉपबॉक्स और किसी एक्सटर्नल फाइल शेयर के साथ. तो ऑल सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज नाउ वेरी सिंपली पॉसिबल with all the connectors available within the logic apps. So you can think that आपके पास सारे tools available हैं, आपने इन सब areas में कोई coding नहीं करनी. You just have to just define steps and you are able to complete the integrations across two systems. And that's how with these simple steps you are able to create the enterprise integration, and that is our goal with this logic apps. तो कनेक्टर्स हैं. तो शबीब एंड मैं जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो इतने सारे कनेक्टर्स हैं कि वी कैन नॉट प्लेस ऑल दोज कनेक्टर्स इन the single slides, but main connectors, if I talk about, you can, if you want to build integration with GitHub, with the Google Drive, with Dropbox, with ERP like Dynamics AX, SharePoint, Twitter. So any of the integrations any of the connectors you can think of, all those connectors are available within the Logic app, and that's how you can build the connectivity across two systems. So these are the connectors. A big simple set demo I will try to show. Demo so cover करेंगे. मैं quickly जा रहा हूँ अपनी environment पे. तो I am into the Azure portal right now. So that's a portal.azure.com right now I am in. So I am just creating a simple application of ticketing. So for example, you have any ticket system
where you are managing or maintaining tickets or the problems with your daily life, and you want to simply email them, right? It's a common scenario. You have a ticketing database where you have your tickets, and you want to alert your developer or the persons who are assigned to the ticket. You want to frequently email them. So that scenario I will try to cover with this logic app. So in this logic app, we have created this simple Azure SQL. So this is a SQL we have created. So I will not go into detail how we have created this SQL, but you can create a simple SQL in the Azure portal. And then if I come to the flow of the logic app, I just need to search the logic app here. And then we can, I can go to this logic app. That's a simple ticketing app I have created. So I'm going to the designer of this thing. So this is how you can open the designer of the logic app. But before that, I mean, if you want to create a simple logic app, you just have to add a new logic app from here, standard or the consumption type, and then you have to define a blank template on it. So once you have the logic app template available here, you can design the simple steps. So you can see that, I mean, without any coding, I could create a simple logic app. So I'm here creating a recurrence, like I want to email every 2 minutes or whatever the frequency I want to set it. So that's a starting point. That is your trigger. So you want to start from a recurrence, or if you want to start from any manual trigger like APIM or something. So based on those triggers, you can start the integration. Then we have the connectivity, or you can say the actions. So within the connectivity, I am creating a connection with Azure SQL where I have the tickets available with me. And this is the database connection. I've set it up. And then I'm running for all the tickets. That's a loop I have created. So within the loop, I'm just reading the simple information from the database and then emailing to my Gmail address. So that's a simple flow without any coding. I have created it, and I'm just about to trigger that thing. So from the run trigger, you can trigger it. It will message about it. So I'm just sharing. I'm just going to the history as well, so we can see from the history. It's still running right now. Sometimes it takes a little bit time. So that I think it's taking some time. So I can show you the bit of previous history as well. As soon as that's finished, it will come into this window. So that's how it's ran. You can see the execution window here, and when it finished, it emails to my Gmail as well. I'm sure if I have the email open with me. I can show you any previous runs. So yeah, you can see that here as well. So all those tickets is coming into my Gmail. So whatever, if I have the coding error or if I have the system error, so whatever the information I have within the database, that is coming to my email address. So that's how you can build this one scenario where you can consume data from the Azure SQL and then email to anywhere. I'm going back to the slides. So this is how you can build integration. So you can build integration with Twitter or with LinkedIn as well, or with any other forum as well. So that's a common logic app, very basic logic app I've covered so far. If I talk about a little bit enterprise integration, so and if I take an example of ERP called finance and operation. तो ERP के अंदर हमारे पास सिनेरियो होते हैं, समटाइम्स हमें इनबाउंड इंटीग्रेशंस बिल्ड करनी पड़ती हैं, समटाइम्स आउटबाउंड इंटीग्रेशंस बिल्ड करनी पड़ती हैं. Inbound and outbound integrations, like I mean, inbound consuming a file from some file location and consuming it within the ERP,
And outbound, you want to export a file from ERP system and save it to your file share. So in इस scenario में भी बाहर एक complex scenario नजर आता है कि आप कैसे mechanism build करेंगे, लेकिन with the logic app it is really very simple. Without any coding you can build this enterprise integration as well. You just need to place a logic app in between, and then you have the connectors to consume with the finance and operation and to the file share as well. So that's how you can build inbound and outbound integration as well. So if I just show the demo of this as well, I'm just going to my environment. Sorry. So yeah, so I'm into my environment. I'm just refreshing so that it's open. So I'm into my Dynamics finance and operation environment. And I can show you a little bit of Visual Studio look and feel as well. So previously I was showing the portal look and feel, so you can design the flows on the portal as well. And same way you can design the flows, logic app flows or the workflows within the Visual Studio as well. So you just have to create, as a developer, you just have to create a new project. When you create a new project, it will come with this template, which contains a PowerShell file for deploying the logic apps. Then you have the logic app itself, and then the parameter file. So with this for this demo, I'm just covering the outbound integration here. So for this outbound integration, I've created a simple scenario. So I want to export a file from ERP system. तो ERP system से हमें फाइल एक्सपोर्ट करनी है, let's say रोजाना रात को at 2 p.m. At some time zone, and then we have to build some connectivity with the ERP. So for the building the connectivity with the ERP, I am creating, I'm calling this connector export package. So so if I talk about export package in more detail, I have to jump to the ERP system. So in the ERP, I have created this data management package, data management project. So you can see that I've created data management project for my integration, like for stock on hand, let's say. So simply you just have to create this data management project within the ERP system. You have to define the entity here. You have to define the file in which you want to export the file. It's taking some time in opening, so as soon as it's open. So yeah, so simple data management project you have to create here. So it's doing it, and while I'm just moving back to yeah, it's open. So you can define a entity here, a mapping here, whatever the field you want to export in the file, and what is your export format that you want to cover. So you can define your export format here. So this is the DMF project we will be calling from the logic app. So here is the connector for the finance and operation, and I'm just calling the export to package action here. So that will call this finance and operation environment and the package that I've defined in the ERP. And then we have some conditions or actions. So I will wait for the package execution to finish, and when it is succeeded, I have to store the output to the file. So I will get the download URL file from my ERP system, and then I will fetch the file from my ERP and start downloading to the file share. So that's how I have defined different steps here. So I'm getting the file from the download URL and then saving a file to the storage location. So that's how you simply create a flow. So you can see that, I mean, without any coding, you can create a workflow and that export a file from the ERP and then store it to the storage location. So if I just go back to the portal and just want to show you run. So as I mentioned in the designer, so this is recurrence based. So either we have to wait for the recurrence to trigger, or we can trigger manually right now here as well. So for the time saving perspective, I'm just running it manually here. It will take some time, and then it's all automatically triggered, and it's in the execution state right now. So as soon as it is finished, it will store the information to my file share.
Yeah, just wait for a minute to finish it. So that's how you can build the logic apps around it. When it finish, it's saved to my storage location. So I have created this storage location as well. Meanwhile, it is running. So this is storage location I have created, and in the storage location, I have different folders for my integrations. So these are folders you can create for based on your scenarios. So wherever you want to export the file. So it's yeah, it's taking some time. So meanwhile, for just saving time, I can cover from the previous runs. So when it finished, you can see that file from here in the storage location, and that's where you can build another side of the integration. You can consume a file from this storage location and probably to email it for your user for your reporting needs. So that's how you can build some sort of enterprise integrations as well. Yeah, so I think it's still running. Yeah, it's still taking some time. So I can move to other part of my presentation, but this is how you can build integration. Um, so now I would like to cover or touch base a little bit some advanced topic as well. This is about the resilience. So a logic app, when primarily is an infrastructure component. So when you create the logic app, when you create a workflow within the logic app, you have to deploy that logic app to the Azure portal or the Azure storage location. So there is a storage location bind with the logic app. तो स्टोरेज लोकेशन के साथ ऑब्वियसली एक रीजन है और एक रीजन की डिपेंडेंसी है, एक स्टोरेज लोकेशन की डिपेंडेंसी है that where it gets deployed. So sometimes जो storage location है that somehow if for any reason if that's not available or that's where we face some connectivity issue with the Azure, and you have a scenario where you want to have your integrations connected at any moment, you cannot bear any disconnectivity. So that's where you need some resilience around those integrations as well. तो अगर आपका resilience का scenario है, आपको high connectivity required है, तो उसके लिए भी with very simple steps, with very simple procedures, you can build the resilience as well. तो आपने करना क्या होगा, अगर आपको कुछ different patterns follow करने पड़ेंगे to achieve the resilience. I will talk about in next few slides कि हम resilience कैसे enable कर सकते हैं, resilience कैसे आप डेवलप कर सकते हैं ताकि आपकी जो इंटीग्रेशंस है वो ऑलवेज कनेक्टेड रहे. तो इसके लिए आपको सिंपली लॉजिक एप्स को दो रीजन्स में डिप्लॉय करना होगा. आप लेट्स से यू कैन से क्रिएट अ सिनेरियो कि आपके पास सेम लॉजिक ऐप है, डेवलपमेंट ने सेम फ्लो क्रिएट किया विदाउट एनी कोडिंग एंड यू हैव टू बिल्ड द रेजिलियंस. तो आपने इस लॉजिक ऐप को दो regions में deploy करना पड़ेगा. If I could take an example, let's say you deployed the logic app in Azure, UK storage location like regions like UK South and another region like UK West. So with the multiple deployment with the same code, you can build some sort of resilience as well. So in the next slide, I will talk about some patterns. तो अगर आपने resilience build करनी है तो आपके पास कुछ different patterns हैं based on your business requirement, based on the scenario or based on how resilient you want to build. तो इसमें एक सिनेरियो है एक्टिव का. तो एक्टिव मीन्स कि आपके पास आपने एक लॉजिक ऐप बिल्ड करी, आपने फ्लो डिजाइन किया लॉजिक ऐप का, and that logic app has to available every time. You cannot expect any disconnectivity. तो आपने इस लॉजिक ऐप को प्राइमरी रीजन लेट्स से यूके साउथ में डिप्लॉय किया, सेकेंडरी रीजन लेट्स से यूके वेस्ट में डिप्लॉय किया, and then you have scenarios like on top of it logic app you can build some APIM, or you can build some load balancer, or you can build some service bus. तो आपका जो इनबाउंड फ्लो हो रहा होगा, इनबाउंड फ्लो के जो मैसेजेस आ रहे हैं लेट्स से, वो आपके इन मैकेनिज्म के थ्रू लोड बैलेंस हो रहे होंगे और ट्रांसफर हो रहे होंगे अदर प्राइमरी लोकेशंस में और सेकेंडरी लोकेशन में. तो एक्टिव के अंदर द बस प्रीरेक ये है कि दोनों लॉजिक एप्स which bound with the same code deployed to different regions और दोनों एक्टिव हैं,
एंड जो आपके पास ऑन टॉप ऑफ इट जो रैपर हैं लाइक APIM, लोड बैलेंसर और द सर्विस बस, ये आपके ट्रैफिक फ्लो को कंज्यूम मैनेज कर रहे हैं कि आपने प्राइमरी रीजन को ट्रैफिक भेजना है और द सेकंड रीजन को ट्रैफिक भेजना है. So that's how you can build active scenario. एंड सेकेंड सिनेरियो जो आपके पास हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाई वॉल्यूम है, आपके पास इनफ्लो ऑफ द मैसेज और आउटफ्लो ऑफ द मैसेज काफ़ी ज़्यादा है, right? And you want to build some sort of a parallelism, some sort of a multi-threading mechanism. So इन सिनेरियो में के अंदर भी आप लॉजिक ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं. आपने सिंपली लॉजिक ऐप को मल्टीपल रीजन्स में डिप्लॉय करना है. ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज क्यूइंग मैकेनिज्म. और आपकी जो लॉजिक ऐप है उसके अंदर लॉजिक इस तरह से होनी चाहिए कि वो मैसेज को फैच करे इंडिपेंडेंटली एंड कंज्यूम करे. तो बोथ ऑफ द लॉजिक ऐप जो है वो कंपीटिंग मैकेनिज्म में होंगे. दोनों जो लॉजिक ऐप्स हैं वो मैसेज क्यू को टारगेट कर रही होंगी और वहां से जो है ना मैसेजेस को फैच करके अपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होंगी. So that's how you can build resilience with the same code deployed to multiple regions, and on top of it, if you build some wrappers, that's how you can build some resilience around it. Another pattern जो कहलाता है वो active passive है. So if you have less active scenarios where you don't need high connectivity, but still you cannot bear a disconnectivity. You need to be into your business with a very minimum downtime. So in that scenario आप जो है ना active passive build कर सकते हो. आपके पास again लॉजिक ऐप्स डिप्लॉय होगी दोनों रीजन्स के अंदर, बट सेकेंडरी रीजन के अंदर वो पैसिव स्टेट में होगी, डिसेबल्ड स्टेट में होगी. And you have to have some mechanism through which you run some scripts or deploy some scripts through which you will enable the secondary region logic app. अगर आपके पास कोई फेलियर आता है, आपके पास अगर कोई डाउन टाइम आता है, so with a minimum downtime or disconnectivity, you can switch over the traffic from one region to another region. So that's how you can build the resilience around it as well. So ये इस तरह से आप लॉजिक ऐप्स को हाई कनेक्टिविटी सिनेरियोस के अंदर भी यूज कर सकते हैं. तो यू कैन सी दैट कि लॉजिक ऐप एज अ मिडल वेयर कितना स्ट्रांगली और पावरफुली अवेलेबल है. आप के पास थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टर्स हैं, आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं, and that's how you can build the connectivity across two systems. And easily आप जो है ना without any hard coding mechanism आप जो है ना enterprise integrations build कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ क्विक स्टार्ट्स और ट्यूटोरियल्स कंपाइल किए हैं. तो अगर कोई डीप डाइव करना चाहता है कि सेशन थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, वेरी बेसिक था, तो अगर डीप डाइव करने के लिए आप इन लॉजिक ऐप्स के लिंक्स को आप फॉलो कर सकते हैं. तो आप काफ़ी अच्छी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. And then if I talk about yeah, that's it. To my end of my presentation. Yeah, so if anyone has any questions or if anyone wants to raise तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. So Jawar, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. थैंक यू सो मच आमिर और शबीब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच. हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं और मैं पहला क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ. उजैर ने पूछा है, व्हाट इफ आई वांट टू इंटीग्रेट माय कस्टम डेवलप्ड .NET ऐप. कस्टम डेवलप्ड .NET ऐप बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं. तो आपके एक इंटरफेस, एक आपका मोबाइल ऐप है, आपका .NET ऐप या नॉर्मल मोबाइल ऐप, कोई भी ऐप हो सकती है आपकी. तो ऐप कुड बी ऑफ एनी टाइप. और आपने अगर उसको इंटीग्रेट करना है किसी सिस्टम से, लेट्स से आपने उस ऐप का डेटा आपने किसी डेटाबेस में मूव करना है और आपने उस ऐप को किसी ERP से कम्युनिकेट कराना है, तो बिल्कुल लॉजिक आप आपके मिडलवेयर के तौर पे कनेक्ट करेगा, आपको कनेक्टर्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप जो है ना आप मोबाइल ऐप से और ऐप से डेटा फ्लो करेंगे लॉजिक ऐप को, और लॉजिक ऐप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग दैट डेटा टू योर ERP और टू अनदर साइड ऑफ द पिक्चर, डेटाबेस की साइड के पिक्चर के पे वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगी. तो बिल्कुल एज आई मेंशन कि मोबाइल ऐप्स हों या नॉर्मल .NET बेस्ड ऐप्स हों, आप इस तरह के इंटीग्रेशंस को बिल्ड कर सकते हैं. दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा. और मेरे ख्याल में इसमें भी आमिर भाई हमें वो गेटवे भी यूज करना पड़ेगा. अगर कोई डेस्कटॉप की है कोई ऐसी, गेटवे भी साथ होगा.
हाँ, देखिए आप अगर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है तो उसको आपको किसी तरह से कम्युनिकेट कराना पड़ेगा एज़्योर से। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब सर्विसेज लिखी हुई हैं, तो आप वो वेब सर्विसेज के थ्रू आप जो है ना वो लॉजिक ऐप से कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एचटीटीपी के कनेक्टर्स मिलते हैं थ्रू विच, और डॉट नेट के कनेक्टर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप जो है ना वो आप एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर लेंगे अगर आपकी जो एप्लीकेशन है ऑन प्रेम भी अगर है तो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अपने इस डेमो के अंदर, मैंने एक सीक्वल सर्वर लिया था। वो सीक्वल सर्वर मेरा अज्योर पे था, लेकिन वो सीक्वल सर्वर मेरा ऑन प्रेम पे भी हो सकता है। आई जस्ट नीड अ मिडलवेयर कनेक्टर इन बिटवीन, ताकि वो ऑन प्रेम से अज्योर कम्युनिकेशन हो सके। एंड वंस वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो गई तो फिर आप लॉजिक ऐप के थ्रू आप वो ऑन प्रेम के किसी भी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे भाई कोई डॉट नेट की ऐप हो, कोई वेब सर्विसेज हो, आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। और आमिर भाई, एक क्वेश्चन है। किसी ने ये फूडी, इन्होंने पूछा है कि लिटिल कंफ्यूज अबाउट लॉजिक ऐप, पावर ऐप एंड पावर ऑटोमेट। तो इन तीनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बिल्कुल। तो पहले मैं लॉजिक ऐप और पावर ऑटोमेट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो लॉजिक ऐप एक एंटरप्राइज लेवल टूल है। पावर ऑटोमेट जिसका प्रीवियस नेम फ्लो था, आप उसको फ्लो कहते थे हम। तो फ्लो मोर ऑफ अ यूजर साइड ऑफ द टूल है। फ्लोज के अंदर आप सिर्फ स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटीग्रेशन बिल्ड करनी है एंड यू हैव डिफाइंड स्टेप्स एंड दैट, तो आप वो उन स्टेप्स के थ्रू जो है ना आप इंटीग्रेशन बिल्ड करते हो। जबकि लॉजिक ऐप जो है वो जो थोड़ा सा पावरफुल है, दोनों सर्वरलेस हैं, दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे। लेकिन लॉजिक ऐप इज मोर टुवर्ड्स द डेवलपर साइड एंड पावर ऑटोमेट्स इज मोर टुवर्ड्स एंड यूजर साइड। तो पावर ऑटोमेट के लिए आपके पास और लेसर नॉलेज रिक्वायर्ड है, लेकिन वहाँ पे आपके पास जो कनेक्टिविटी पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लिमिटेड होती है। जबकि लॉजिक ऐप में आपके पास यू हैव वर्ल्ड ओपन विथ यू, आप जो भी आप कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं लॉजिक ऐप के साथ बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जी। पावर एप्स जो है, पावर एप्स तो आपके पास लाइक एक मैकेनिज्म है टू कम्युनिकेट। पावर एप्स इज योर लाइक फॉर एग्जांपल योर ऐप दैट परफॉर्म सम प्रोसेस। तो आप उस ऐप को यूजिंग लॉजिक ऐप और पावर ऑटोमेट आप डेटा फ्लो करा सकते हो। तो पावर ऐप तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंपोनेंट है। पावर ऐप के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी एप्स डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस सिनेरियोज डिजाइन कर सकते हैं, आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। तो वट एवर द फंक्शनैलिटी यू वांट टू डिजाइन, यू कैन डिजाइन ऑन द पावर एप्स। और उसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको आइदर लॉजिक एप्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपके कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं, आपको हाई लेवल एंटरप्राइज इंटीग्रेशन बिल्ड करनी है तो लॉजिक एप्स हैं, और अगर आपके सिंपल सिनेरियोज हैं, सिंपल फ्लोज हैं, तो आप पावर ऑटोमेट के थ्रू जा सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिए जो क्वेश्चन थे। और या, दैट इज ऑल। बाकी आमर भाई, थैंक यू सो मच, रियली नाइस थैंक टू हैव यू। थैंक यू सो मच शबीब रजा, थैंक यू, आपने भी यू। एफर्ट की। इन होपफुली कनेक्टिविटी इश्यूज लाइफ का पार्ट है, they can always अनफॉर्चुनेटली। they can always happen, but I really appreciate all your effort, your willingness to share with community. Thank you so much and hope to see थैंक यू you सो again. मच, थैंक यू। आई होप Thank you. आगे के सेशंस भी बहुत एनर्जेटिक होंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस सेशंस। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks. Take care. थैंक यू, Bye. थैंक यू वेरी मच, बाय। Okay. That's great. We have our next speaker. Next speaker is Rishona. Rishona will join us just in a couple of minutes. She has joined, and her topic, we will be starting her session in 1 or 2 minutes. Please stay tuned, and I will just bring Rishona to studio.